students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 12 of your class 6 English grammar, that is adjectives. So let's begin with this lesson. Adjectives are words that add some more meaning to noun or pronoun, जो थोड़ा और meaning add कर देते हैं noun में और pronoun में. Like adjectives are describing words. ये क्या होता है? Adjectives हमारे describing words होते हैं. Adjective can be used before or after a noun or pronoun in a sentence. सेंटेंस में या बिफोर मतलब पहले भी लग सकते हैं या बाद में भी लग सकते हैं नाउन या pronoun से. So read the sentences given under each picture. Gaurav is a sincere boy. गौरव कैसा boy है? Sincere boy है. गीता is an intelligent girl. गीता कैसी गर्ल है? Intelligent girl है. महेश is tall. महेश कैसा है? Tall है. What do the words printed in the board denote? These words add certain information. Yes, इस कुछ information add कर रहे हैं about the subject of the verb sentence. Such words are called adjectives. And words को क्या कहते हैं? Adjectives कहते हैं. Adjectives are of different kinds. Different kinds के होते हैं adjectives. The kind of adjectives are adjectives of quality हो गया. The word that show qualities. जो word क्या show करता है? Qualities show करता है. The word that show qualities of noun or pronoun. जो word क्या show करता है? Quality show करता है noun या pronoun. इनको क्या कहते हैं? Adjective of quality कहते हैं. For example, Ram is thin. Ram कैसा है? Thin है. Golu is fat. Golu कैसा है? Fat है. The milk is cold. Milk कैसा है? ठंडा है. The cake looks good. Cake कैसा लग रहा है? Good, अच्छा लग रहा है. Now adjectives of quantity. The word that denote quantity. जो word क्या denote करता है? Quantity denote करता है noun की. Are known as adjective of quantity. These adjectives indicate the quantity, that is how much. ये indicate करते हैं quantity की कितना, how much मतलब कितना. Like for example, there was little food left in the plate. थोड़ा ही food बचा था किसमें? Plate में. How many people? How many pens do you want? तुमको कितने pens चाहिए? There were a few grains of rice in the plate. There was no water in the bottle. So this was the adjective of quantity. Now let's talk about adjective of number. कि कितने number में है? So the adjective of number that the adjective that denote the number of person or thing. क्या denote करता है? Number किसका? Person का या किसी चीज का. Are known as adjective of number. These adjectives indicate the number, that is how many. Like I have 10 rupees. मेरे पास क्या है? 10 rupees है. Do you have any work to do? क्या तुम्हें कोई work करना है? Many boys were present in the ground. बहुत सारे boys present थे कहाँ? Ground में. No, I have no work. मेरे पास कोई work नहीं है. Dinesh stood first in the class. Dinesh first आए class में. So there, any, many, no, first. This is the adjective of number. Now demonstrative adjectives क्या होते हैं? जो demonstrate करते हैं कि ये चीज, ये वाली, this, that, these, those. So the adjectives that denote which person or thing is indicating what. कोई person या कोई चीज क्या indicate कर दी है are known as demonstrative adjectives. They immediately indicate which one. Demonstrative things like this, that, these, those, such, etc. Now this book is mine. ये book क्या है? मेरी है. I like these boys. मुझे ये boys पसंद है. You should not believe such people. तुम्हें ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए. Now let's talk about interrogative adjectives. Interrogative name से पता चल रहा है जिसमें questions put up हो रहा है. Adjectives which are used with nouns to ask question. जो adjective किसके साथ use हो रहे हैं? Nouns के साथ हो रहे हैं. Questions put up करने के लिए are known as interrogative adjectives. उन्हें हम क्या कहते हैं? Interrogative adjectives कहते हैं. Interrogative adjectives are which, what and whose. For example, which bungalow do you like? तुम्हें कौन सा bungalow पसंद है? Which class do you read in? किस class में तुम पढ़ते हो? Whose car is this? ये किसकी कार है? Question mark से end होता है हमेशा interrogative sentences. Which book do you want to buy? तुम्हें कौन सी book खरीदनी है? Possessive adjectives क्या होते हैं? जो ownership show करते हैं. Possessive adjectives are used to indicate possession. ये क्या indicate करते हैं? Possession indicate करते हैं. Like they are always used before noun. ये हमेशा noun से पहले use होते हैं. Possessive adjectives are my, are yours, his, her, their and its. My shirt is red. His eyes are black. मेरी शर्ट क्या है? Red है. उसकी eyes क्या है? Black है. His वगैरह
His shoes are brown. उसके shoes क्या है? Brown कलर के हैं. Now degree of comparison. When two or more nouns or pronouns are compared. जब दो या दो इससे ज़्यादा nouns या pronouns क्या होता है? Compare होता है किससे? With the scale of degree. So the noun comparison is called the degree of comparison. इसको क्या कहते हैं? Degree of comparison कहते हैं. Now there are 3 degrees of comparison of adjectives. Like positive degree, comparative degree and superlative degree. Now positive degree क्या है? When an adjective indicates a specific quality of noun. तो कोई adjective क्या indicate करता है? Specific quality noun indicate करता है. But now without making any comparison, it is known to be in positive degree. उसे हम किस में known करते हैं? Positive degree में. Like Dr. Rao is fit. Dr. Rao क्या है? जो fit है. The wooden box is heavy. Wooden box क्या है? Heavy है. Miss Agarwal is beautiful. Miss Agarwal क्या है? बहुत beautiful है. So comparative degree क्या होता है? When we use an adjective to compare two person or thing. जब हम किसी adjective को use करते हैं दो person या किसी दो चीज को compare करने के लिए. The adjective is known as to be in comparative degree. आपका adjective क्या है? Comparative degree में. The comparative degree indicates less or more amount. क्या indicate करती है? कम या ज्यादा amount indicate करती है. एक specific quality between two or now. Two nouns or pronouns. Specific quality indicate करिए two nouns या pronouns में. Like the word then is used for the comparison. Then use होता है word जो आपका comparison के लिए. Mr. Mohanty is fatter than Mr. Silla. वो fatter है किससे ज़्यादा? Mr. Silla से ज़्यादा. English is easier to speak than Hindi. Easier है English. हिंदी बोलने से easy है. Sindhu looks taller than Saina. Miss Fry is more beautiful than Miss Caf. Today the weather is better than yesterday. So now let's talk about superlative degree. And we use an adjective to compare more than 2 person. जब adjective use होता है दो person को compare कर दो से ज़्यादा person को compare करने के लिए या चीज़ों को compare करने के लिए, it is known to be superlative degree. वो किस में जाना जाता है? Superlative degree में जाना जाता है. The superlative degree indicates maximum or minimum. ये क्या indicate करती है? Maximum या minimum amount indicate करती है. एक specific quality का among more than two nouns or pronouns. Like for example, Ravina is the tallest girl in the class. Superlative आ गया ना, सबसे पूरी क्लास में आ गया. पूरी क्लास में क्या है? Tallest girl है. All over जो होता है. Now Mr. Pandey is the fattest person in our office. पूरे office में वो सबसे fattest person है. Superlative हो गया. Sachin is the most popular cricketer in the world. Nisha is the most beautiful girl in the class. So whenever adjective is used in the superlative degree, जब भी कोई adjective superlative degree में use होता है, the article the is placed before it. The article the लग जाता है उससे पहले. The longest shoot, the tallest girl, the toughest man, etc. A formation of comparative and superlative degree. Formation कैसे होती है? Comparative और superlative degree की. The common rule to form comparative and superlative degree of adjective from the positive degrees are for the adjective ending with e. जो adjectives आपके e से end हो रहे होते हैं, r is added to form comparative degree. उसमें r add हो जाता है उसको comparative degree बनाने के लिए, and st to form superlative degree. st लग जाता है superlative degree बनाने के लिए. Like positive क्या आपका safe है, comparative में safest, superlative में safest, and wide, wider, widest, large, larger, largest, fine, finer, finest, wise, wiser, wisest. For the adjective ended with consonants and vowels, जो आपके adjective consonants और vowels से end हो रहे होते हैं just before it, the last letter consonant, जो आपका last letter होता है consonant is doubled and er and est are added. er और est लग जाता है किसे? comparative और superlative degree में. Like thin, thinner, thinnest, hot, hotter, hottest, big, bigger, biggest, fat, fatter, fattest, tall, taller, tallest. Now for the adjectives ending with y, जो आपके adjectives के send हो रहे होते हैं y से, and preceded with by a consonant. किससे precede होते हैं? consonant से precede होते हैं. क्या add होता है? The y is changed into i. y आपका i में change हो जाता है. Then er and est are added to form. er और est लग जाता है form में, to form the comparative and superlative degree. So comparative superlative degree फॉर्म करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव में और कंपैरेटिव सुपरलेटिव. पॉजिटिव इज हैवी, कंपैरेटिव हैवियर, सुपरलेटिव हैवीएस्ट, नॉइजी नॉइजियर, नॉइजिएस्ट, मैरी मैरियर, मैरियस्ट, इजी इजियर, इजिएस्ट, हेल्दी हेल्दियर, हेल्दिएस्ट. नाउ फोर्थ, फॉर द एडजेक्टिव्स एंडिंग विद वाई, जो आपके एडजेक्टिव्स वाई से एंड हो रहे होते हैं एंड अ वोवल जस्ट बिफोर इट.
उससे पहले ही vowel है, like A आ गया, E आ गया. So ER and EST must be added to form the comparative and superlative degree respectively, like gray, grayer, grayest, gray, grayer, grayest. Now for the adjectives with two or more syllables, जिनमें दो या दो से ज़्यादा syllables आ जाते हैं, like more, उसमें क्या करता है, more and most are used before the positive degree, more और most लग जाता है positive degree से पहले, to form comparative and superlative degree. Interesting, more interesting, most interesting. Suitable, most suitable, most suitable. Famous, more famous, most famous. Useful, more useful, most useful. Wonderful, more wonderful, most wonderful. Degree of some adjectives are changed irregularly. जो degree होती है कुछ adjectives की वो irregularly change होती है. Positive, comparative और superlative. Positive है आपका little, comparative less या lesser, superlative least. Far, far, further, further, farthest, furthest. Good, better, best. Bad, evil, ill का हो जाता worse, worse. Many, much का more and most. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a wonderful day.